Good day, class. Let's begin our issues in world economy. So, in order to start this course, let's explore the world, the geography, and let's connect it towards the economy. So, our first topic is issue the new economic geography. Now, in order to understand the new economic geography, we need to know what is geography. This is the study of physical features of Earth and its atmosphere. यानी what is in earth and its atmosphere यानी its surroundings and of human activity जो भी human activities हम perform करते हैं as it affects and is affected by these यानी हम जो भी activities करते हैं वो अर्थ के environment को atmosphere को geography को affect करते हैं और वो effect फिर हमारे ऊपर भी affect करता है including the distribution of populations and resources and political and economic activities. Yani how in this earth the population is designed, yani kaun se ilake hain jo densely populated hain. Then you have some areas which are desertous where there is no population, and there are some areas where there is only a few population. So how and why are these distribution of population resources फिर यही चीज है कि कुछ है जो enriched है with the mineral resources with the natural resources and there are some which do not have any natural resource, so why is it so? And political economic activities, yani what are the economic activities or the political activities happening in the world and in its surroundings. So these are the things that we study in geography. Now, connecting geography with economic geography, the study of geographical distribution of economic resources and their use, यानी how the economic resources are distributed, ठीक है कि किन इलाकों में कौन से economic resources हैं, यानी as you know कि जो big cities हैं वहाँ पे कैपिटलिज्म वहाँ ज़्यादा है, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है. So how are these resources distributed in an economy or in a country? We can also say that economic geography is a branch of geography which deals with the relation of physical and economic conditions to the production and distribution of commodities. As you all know, कि economics में हम लोग discuss करते हैं production and distribution of resources या of commodities. But over here हमें उनको link करना है with the physical and economic conditions कि जहाँ पे भी production हो रही है वहाँ का basically environment किस तरह का है. The study of geography of economic activities developed from a focus on commercial activities and the explanation of resources for economic gain, yani how you can utilize your resources best for the maximum economic growth. This is called economic geography. Now the question arises कि क्यों पढ़ें ये course? Why economic geography? What is the significance of this economic geography? So because this examines the impact of globalization on people's livelihood, यानी जो सेंट्रलाइज हुआ है, हमारा एक ग्लोबल विलेज बना है दिस अर्थ, तो उसका हमारी लाइव्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हमारी जॉब्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है अक्रॉस ग्लोब. Obviously when this comes for internationalization or globalization, तो हमारी job natures, job routines, everything is at the global competitive level and tries to explain the causes and consequences of uneven development between and within different regions. यानी यहाँ पे हम explain करते हैं कि क्यों है ये uneven distribution, क्योंकि सारे economic regions के अंदर same distribution नहीं है. There are different regions with different resources. So why is it so? We can say that this is the central to economic development, because for economic development you need to know the exact economic geography in order to allocate the resources to old and new industries as economy grow. यानी हम whenever your economy is growing, तो उसको किस तरह से हमने resources allocate करने हैं, किस stage पे कौन से resources उसको देने हैं, ये उसकी geography decide करती है. Transportation networks, living far fulfilling markets within and across countries.
यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक और प्लस पॉइंट क्या है कि हम ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, कि हाउ टू कनेक्ट द डिफरेंट रीजन्स अक्रॉस वर्ल्ड, वेदर आप उनको कनेक्ट करते हो बाय एयर, बाय लैंड, बाय शिप, तो हाउ आर यू डूइंग, कि किस रीजन को कौन सी फैसिलिटी बेस्ट लिंक करेगी, दिस इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज को एग्जैक्टली कहाँ एलोकेट होना चाहिए। सो दिस इज अ बेसिक फोकस ऑफ द कोर न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन कि ये है क्या चीज। Now, according to McFarlane, economic geography is the study of influence extended on economic activities of man by his physical environment. यानी ये डिसाइड करता है कि ज्योग्राफी की एक ऐसी स्टडी है जो मैन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उसकी सराउंडिंग्स का, इसके एनवायरनमेंट का, मोर स्पेशली बाय फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ लैंड, यानी जो ग्लोबल या लैंड का सरफेस है उसके हिसाब से क्या इफेक्ट है, द क्लाइमेटिक कंडीशंस विच प्रिवेल अपॉन, के कौन सी क्लाइमेटिक या मौसमियात की चेंजेस हैं जो उसका इम्पैक्ट आता है, द प्लेस रिलेशन इन विच इट्स डिफरेंट रीजन्स स्टैंड टू वन एंड अदर, यानी किस तरह से एक अर्थ के डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमीज हैं, वो किस तरह से दे स्टैंड टुगेदर। We can also say, according to Brown, economic geography is that aspect of the subject which deals with the influence of environment and organic and inorganic upon the activities of man, यानी जो भी एक environment के अंदर organic that is natural है या inorganic है, उनका क्या है impact upon the activities of men, या हम उसको कह सकते हैं कि upon the human life, upon humanity. So this is all your definition. Let's go for further definitions. According to Shaw, economic geography is concerned with the problem of making a living, यानी क्या है किस तरह से एक लिविंग को बनाना है, with world industries, दुनिया की different industries, with basic resources and industrial commodities, यानी किस तरह से ह्यूमन बीइंग को फैसिलिटेट करना है दुनिया के अंदर मौजूदा फैसिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से मैन को क्या फायदे हैं, किस तरह से उसको अकोमोडेट करना है, वेल इक्विप करना है। और पाउंड्स क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, कि इस दुनिया के सरफेस पे मैन की जो भी प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज हैं, यानी वो उसका लेबर है या उसका सर्विसेज सेक्टर है, तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पूरे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स में। सो दीज आर फ्यू डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। नाउ द स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, के इसकी कहाँ ये रिलेट करती है फील्ड। सो इकोनॉमिक जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द प्लेस, जगह की स्टडी है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड, कि किस तरह से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस पूरी दुनिया के अंदर। तो इसका स्कोप लिमिटेड नहीं है टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज या इकोनॉमिक एग्लोमेशन या ट्रांसपोर्टेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं कि एथिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ अर्बन फॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन एटसेट्रा, इस पे ये लिमिटेड नहीं है रियल एस्टेट वगैरह पे। इट हैज द स्कोप बियॉन्ड इट एज वेल, यानी हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज जो हैं जो आउटसाइड द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, अंडर वाटर, ऑन द अर्थ और अबव इट इन द एयर, जो भी सराउंडिंग्स हैं वो सारा कुछ कवर होता है आपकी ज्योग्राफिक एक्टिविटीज और ज्योग्राफिक इकोनॉमी के अंदर। Here are some sub-disciplines of economic geography, that is geography of agriculture, यानी हम इसके अंदर कवर करेंगे agriculture sector as well, कि how the farmers are producing, which are the better places to produce, how to improve production in order to earn more, ये भी एक इशू है दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, के कौन सी इंडस्ट्रीज दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ लोकेटेड है,
और क्यों है, और वहां पे किस तरह की उनको लेबर या कैपिटल सप्लाई है, तो या किस तरह से वो वर्ल्ड के अंदर हेल्प कर रही है प्रोडक्शन में, या किस तरह से वो इश्यूज क्रिएट कर रही है टुवर्ड्स योर वर्ल्ड इकोनॉमी. देन वी विल बी डिस्कसिंग ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड किन किन कंट्रीज के अंदर अंडर विच एग्रीमेंट्स परफॉर्म कर रहा है, और व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड. देन वील गो फॉर ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ फाइनेंस. इन दोनों के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बेशक वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट है टुवर्ड्स द ग्लोबल प्रोडक्शन. Apart from this, what are the issues created due to these geographies? And secondly, the geography of transportation and communication. No doubt this is very important. तो ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के अंदर कौन से बैरियर्स हैं, कौन से इश्यूज हैं जो ये ग्लोबली अराइज होते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज सब डिसिप्लिन्स इन दिस कोर्स. Now let's go for the few approaches for economic geography. Number one, that is regional approach. It attempts to study the economy of different geographical regions in a country. As its name suggests कि regional approach यानी हम यहाँ पे discuss करेंगे एक ही country के अंदर मुख्तलिफ regions. For instance, when we talk about Pakistan, तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कुछ deserts भी हैं, कुछ plains हैं, कुछ हमारे पास hilly areas हैं, कुछ agricultural fertile land है. तो how these resources, yeah, these geographical areas basically complement each other. Further, it says the concept of a region is well integrated as best accessibility to and from the regional capital, कि उस region के अंदर कौन सा capital available है, and well balanced as regard to its resources, economic development, commerce, culture, and occupation is one that so far has not spread outside the ranks of the geographers and the planners. यानी किस ज्योग्राफी से हम कौन सी चीज बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज की, तो वी टारगेट टुवर्ड्स द रूरल एरियाज. जब हम बात करते हैं अपनी हैवी मैकेनिकल या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की, तो फिर हम चूज करते हैं मेट्रोपॉलिटन्स या बिग सिटीज जिनके पास इलेक्ट्रिकल इश्यूज ना हो. तो दिस इज हाउ हम डिसाइड करते हैं कि किस रीजन के अंदर हमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. The basic advantage of regional approach is that it gives us a better and comprehensive knowledge किस चीज की, of different parts of a unit, कि एक country के अंदर कौन से different parts हैं, उनका आपस में relationship, and to the unit as a whole, और फिर उनका overall country के ऊपर या overall production circle के ऊपर impact. This is true whether the unit is a country, a continent or the world. यानी अगर हम एक country के ऊपर बात करते हैं तो क्या उस country के मुख्तलिफ इलाके एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर कंट्री को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जब हम बात करते हैं पूरे कॉन्टिनेंट की, लेट्स से एशिया, तो उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका की आपसी रिलेशनशिप, और फिर ओवरऑल कॉन्टिनेंटल लेवल पे उनका क्या इम्पैक्ट है. और एट अ बिग लेवल व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड, तो उसके अंदर जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप, एंड देन उनका इम्पैक्ट अपॉन द वर्ल्ड. So this is your approach number 1, that the regional one. Let's go for the next one. Systematic or commodity approach. This approach provides a systematic description and interpretation of the distributional pattern of individual resources or commodity or an industry. यानी इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि एक हायरार्की, एक सिस्टम कि किस तरह से चैनलाइज की जाती हैं इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज को. यानी फॉर इंस्टेंस जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल की, तो उसके अंदर हमें किस स्टेज पे धागा चाहिए, किस स्टेज पे हमें लेबर चाहिए, किस स्टेज पे हमें बटन्स चाहिए. सपोज फॉर इंस्टेंस एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो किस तरह की कमोडिटीज किस स्टेज पे किस तरह से किस सिस्टम में चाहिए. दिस इज व्हाट इट एनालाइजेस. इट एनालाइजेस द होल सीक्वेंस ऑफ देयर डेवलपमेंट, यानी किस तरह एक पूरा सीक्वेंस चलता है, एंड कैचेस देम टू द मार्च प्रोग्रेशन ऑफ द, यानी किस तरह से ये इसको पूरा प्रोग्रेशन में लेके आता है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है और फिर इसकी फाइनल डेवलपमेंट होती है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन.
Number 3, that is activity approach. Let's see, इसका नाम क्या कहता है? This aims in dividing men's basic activities into suitable categories. यानी हम अपनी basic activities को economy के अंदर divide कर देते हैं into primary, secondary and tertiary activities. I guess you all have the knowledge about all three of them. The primary includes the activities like agriculture, foresting, fishing, hunting, कलेक्टिंग एंड माइनिंग एटसेट्रा. यानी ये सारी चीजें वो हैं जो कोर स्टार्टिंग में करती है इकोनॉमी, जब वो अपने इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर होती है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द लैंड एंड ऑल ऑफ देम आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर. फिर उसके बाद एज योर इकोनॉमी ग्रोज, then you go for secondary activities which include that depend to the process of converting the primary activities into the production. यानी हम इसमें जैसे प्राइमरी कॉटन हमारा था प्राइमरी एक्टिविटी, अब कॉटन को कन्वर्ट करना इनटू टेक्सटाइल इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी. तो यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ कंट्री व्हेन यू कन्वर्ट योर प्राइमरी एक्टिविटीज इनटू द सेकेंडरी वन. एंड द लास्ट इज द टर्शरी एक्टिविटीज. अब ये क्या है? दीज आर नेसेसिटीज टू सेट अप लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एटसेट्रा. यानी you can say कि these are the consultancy or services sector of an economy. जब एक इकोनॉमी परफॉर्म करती है सर्विसेज, यानी वो कंसल्टेंट करती है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एग्रीकल्चर, यू कैन ग्रो बेटर प्रोडक्ट्स, और हाउ कैन यू इक्विप योर इंडस्ट्रीज. तो जब ये चीजें हम कंसल्ट करते हैं, गाइड करते हैं किसी को, जब इस तरह की सर्विसेज देते हैं, नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, तो ये आ गई आपकी tertiary form of economy जो mostly developed countries करती हैं. Number 4 is principal approach. In this approach, generalizations are made about man and its environment on the basis of analysis of the facts and the specific time period. यानी इसके अंदर हम analysis करते हैं humanity का और उसकी surroundings यानी उसके environment का किसी भी particular period of time के लिए. So these were the approaches for economic geography. Now, the methods to study geographical economics. Here we go. Now we have like 3 methods in it. Number 1 is traditional method. It has further 3 categories that we'll be doing in the coming slides. Likewise, we have philosophical method, and then we have modern method. So they also have subfields which we'll be discussing in our coming slides. The traditional method, it includes regional method, commodity method, and principal method. These 3 we have already done. If you can go back to the approaches towards like in the previous slides that we have done, so these are the same. यानी regional के अंदर हम regional activities को discuss करते हैं, commodity method or principal method, all 3 we have done in the previous section toward when we were discussing the approaches. Number 2, the philosophical method in 1990s. इसके अंदर फिर हम आ जाते हैं, 3 divisions हैं. Number 1 is positivism. It employs the scientific method to interpret and understand issues in the economic geography. यानी किस तरह से हम economic geography के अंदर जो issues आते हैं उनको हम hypothetically यानी hypothesis बना के एक empirical method से test करते हैं, that you normally do in your research work. तो ये हम कहते हैं positivism, कि हम किसी चीज का एक दूसरे के साथ relation बनाते हैं, हम उसका एक hypothesis develop करते हैं और उसके ऊपर हम data collect करके और results analyze करते हैं. Number 2 is structuralism. The economic structure cannot be directly observed. किसी भी economic structure को इतना immediate हम observe नहीं कर सकते. So ideas should be developed that will help us to understand what we see and experience. यानी in order to experience or to understand better what you see, या जो आपको नजर आ रहा है, जो immediate experiences हैं, उससे पहले एक understanding डेवलप करनी पड़ती है. तो दैट कम्स इन स्ट्रक्चरलिज्म, यानी प्रीवियस हमें जो पास्ट थ्योरीज पढ़ के एंड देन हम उसको रिलेट करते हैं. नंबर 3 इज ह्यूमनिज्म.
Here, the economic geographers object to both positivism and structuralism. On the basis of these approaches, view people as responding mechanically to the structural forces. यानी इसके अंदर हम दोनों का combination करते हैं, जो empirical analysis था और जो theory part था जिसको हम experience करते हैं, इन दोनों का एक combination बना के और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उन theories को empirically test किया जाता है, यानी एक mechanics create करते हैं in order to observe how the environment is behaving and how it is related to the theories that we studied in the past. Number 3 is modern method. Since last 3 decades, ये चल रहा है till it's continue. It also has 3 subcategories. Number 1 is system analysis, stresses the study of the whole as well as of the parts. The world economy can be regarded as a set of interlocking parts और subsystems. यानी एक दुनिया के पूरे सिस्टम को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटी छोटी इकोनॉमीज के अंदर, ना लाइक पाकिस्तान इकोनॉमी, फिर उसके अंदर भी हमारी रीजनल इकोनॉमी, तो ये सब यूनिट्स हो गए जो फिर कंबाइन होके बिग यूनिट्स बनते हैं और फिर वो फर्दर इंटीग्रेट होके तो ग्लोबल लेवल पे एक पूरा यूनिट बनता है. तो ये एक सिस्टमेटिक वे है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसमें हम वी स्टडी फ्रॉम स्मॉल रीजन्स and then we combine them and we go for the big regions and then we go to the global level. This is how we study. Then we have behavioral method. This is one of the finest or latest method in the economics that we study the behaviors, studies the consumer behavior, movement of trip behavior, etc. यानी हम किस तरह से डिसीजन मेकिंग जो है एक कंज्यूमर की, उसके क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उसके बिहेवियर को. यानी अब हम डिमांड सप्लाई थ्योरी जो नॉर्मली हम आप लोग पढ़ रहे थे पहले, उसमें कंज्यूमर प्रेफरेंस दैट यू स्टडीड वो सिट्रस पैराबिस में था जब आप इनिशियल कोर्सेज में थे. बट नाउ कंज्यूमर बिहेवियर इट्स इटसेल्फ अ सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हाउ अ कंज्यूमर बिहेव्स. तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट रीजन्स के लोग differently behave करते हैं in different situations. The last one is institutional method. ये क्या है कि economic activity cannot be studied at individual level. It needs social institutions. यानी हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक सिंगल यूनिट एक एक इंसान के लेवल पे नहीं पढ़ सकते. इसके लिए हमें एक टोटल इंस्टीट्यूशन लेवल पे इसको पढ़ना पड़ेगा. जैसे इकोनॉमी के अंदर हम बात करेंगे तो हम उसको एक डिमांड साइड पे पढ़ सकते हैं, हम एज अ फर्म लेवल स्टडी कर सकते हैं कि वी नीड टू डिवाइड एंड ऑर्गेनाइज द इकोनॉमी or integrate them into institutional level. Now let's see what Mr. Krugman, the king, says about new economic geography. Economic geography is integrated into classical trends and theoretical models. यानी जो classical पिछले trends हमने देखे, फिर उनको हमने relate किया अपने theoretical models से. These models are in addition to classical theories of localization and depend on new growth and new trade theories. As you all know, the new trade theories, the new growth systems, तो उसके अंदर जो न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स बने उनको हम अब रिलेट करते हैं पुरानी क्लासिकल थ्योरीज के साथ कि वेदर वो मैच करते हैं या नहीं. Many economic activities are evidently concerned geographically. यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कनेक्टेड हैं, वो कंसर्न्ड हैं, वो बेसिकली ज्योग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं. इट इज द ज्योग्राफी व्हिच इफेक्ट्स your economic activities. So this is how Paul Krugman connected geography to the economy, and this is what we have learned. And thank you so much for. I hope the things are clear to you. Goodbye.